Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello everyone. So today we are going to study the question of microeconomics. Explain the microeconomics and its features. So what is microeconomic? Microeconomic is a study of particular firm, household, individual prices, wages, income, individual industry and particular commodity. So according to Professor McConnell, microeconomics we examine the trees and not the forest. Microeconomics is useful in achieving the worm's eye view of some very specific component of our economic system. Means microeconomics can achieve a worm's eye view, or we can say a bird's eye view, how the bird by his eyes look in the sky and find out the destination, overall destination, where he is and where he want to go. So same way microeconomics is helpful to study the question how to produce, what to produce, where to produce and whom to produce. So microeconomics is helpful to study a tree, not the entire forest. So we are in features of microeconomics. So features of microeconomics consist, first point, study of individual units or individual aspects. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ हेल्पफुल. क्या क्या स्टडी करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है? माइक्रो इकोनॉमिक खाली हमें इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करता है, एग्रीगेट यूनिट के साथ डील नहीं करता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल फर्म बिहेवियर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इज रिलेटेड टू डिमांड साइड, ग्राहक की जो साइड होती है डिमांड साइड, और प्रोड्यूसर की जो साइड होती है वो सप्लाई साइड होती है. सेकेंड पॉइंट इज यूज ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? व्हेनेवर टू पॉइंट्स कर्व intersect each other. Just for example we can say when demand curve and supply curve intersect each other, so it is called as a equilibrium analysis. So microeconomics is helpful to use for partial equilibrium analysis. It deals with equilibrium of consumer बोला तो demand side, or a producer or a firm at a time. So second point is use of partial equilibrium analysis. Point number third is price theory. Microeconomics deals with the price theory because it deals with product pricing, factor pricing. Product pricing is related to market forces. Scope of microeconomics में हमने पढ़ा था. प्रोडक्ट प्राइजेस किसके साथ रिलेट होते हैं? मार्केट फोर्सेस. मार्केट के दो फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड इज रिलेटेड टू व्हाट? कंजम्पशन पॉइंट, एंड सप्लाई इज रिलेटेड टू व्हाट? प्रोडक्शन साइड. सो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस किस पे डिपेंड है? प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या आता है? theories of factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. Point number 4 is study of isolated variables. Isolated variables means microeconomic studies about the individuals and firms. It's also useful to study what? An individual unit and a firm related factor, but it does not study what? Aggregate, because aggregate comes in, total comes in which activity? Total comes in a macroeconomic, that is whole economy, like in national income, total employment, total demand will come under what? Macroeconomics. Point number 5, unrealistic assumptions. Assumptions of microeconomics is unrealistic. It is based on certain unrealistic assumptions like other thing being constant. This is the main assumption which is followed by Parable's law. Point number 6, does not consider time. Microeconomics do not involve any kind of time analysis. It do not have any kind of time limit. So it is just a static in nature. It is not dealing with time analysis. Point number 7, analysis of factor and product pricing. माइक्रो किसके साथ रिलेटेड है? पहले भी मैंने आपको बोला, फैक्टर प्राइसिंग के साथ रिलेटेड है और प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइस इज रिलेटेड टू व्हाट? डिमांड एंड सप्लाई. एंड फैक्टर प्राइसिंग किसके साथ रिलेटेड है? थ्योरी ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. पॉइंट नंबर 8, बर्ड्स आई व्यू और वर्म्स आई व्यू. माइक्रोइकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू और वर्म्स आई व्यू of economic activity, that is detail. We have to look in whole economy, out of which one individual unit is studied in detail. Looking into economy in total, but one individual unit is studied in detail, not the whole economy. So microeconomic is the base for macroeconomic.
from out of the one mango is cutting into pieces and then it is studied. So one mango cutting into pieces of slicing method. Slicing method is applicable in microeconomics. Cutting into pieces and studied in detail. One individual pieces in detail is studied. So it is called as a microeconomics. So microeconomics is examination of trees and not the forest. So this overall all the points of features of microeconomics. So meaning definition of microeconomics. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल दैट टाइम स्टडी, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट्स टाइम टू स्टडी. थैंक यू.